OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter that we are doing, human reproduction, we had discussed about implantation. कैसे zygote का implantation होता है in the uterine wall. Today we are going to go ahead and discuss about how pregnancy is maintained, right? Pregnancy कैसे अगर करती है, how it is maintained, and we are also going to talk about how the embryological development occurs. So today the topic is pregnancy and embryological development. Alright, so we are again going to cover these two under certain subheadings. Let us write those down. So we'll be talking about connections which are made during implantation. Right, and by connections what we mean is कि जो fetus या developing embryo होगा उसके और maternal genitalia के uterus वाले part के साथ कुछ ना कुछ connection होना चाहिए so that implantation and further pregnancy is successful. So we will be talking about those connections and that connection results in the formation of the placenta. So again a very important feature which is to maintain pregnancy. Right, so we are going to discuss about the placenta, कैसे बनता है, क्या structure होता है, and the most important thing is the function of placenta. So we will be also dealing with the functions of the placenta. Apart from this, we will also be talking about how the embryo undergoes development to form the fetus. Alright, so when we talk about the embryological development, we are going to be talking about the different trimesters. So we'll be talking about the first trimester. And you already know the first trimester extends between 1 to 3 months of pregnancy. Then we will be talking about the second trimester, which extends from the 4th to the 6th month of pregnancy. And then finally about the third trimester or the final trimester, which extends from 7th to 9th month of pregnancy. So we are going to look into the details of how the embryo develops into the fetus in these 3 trimester months. Right? So let us begin. First of all, as you know, the implantation of the embryo or the developing embryo, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी stages पढ़ी थी जिसमें embryo का development हो रहा था, right? We had discussed कि blastocyst stage में embryo का implantation होता है in the uterine wall. और blastocyst के बारे में भी जब हम लोगों ने structure की बात की थी, we had talked about how the blastocyst is formed when the blastocele forms, right? तो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने बनाया भी था कि कैसे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ सेल्स and this layer of cell is termed as the trophoblast layer. Right, and then there is also the inner mass of cells which consist of stem cells, and this inner mass of cell actually forms the embryo. Right, so this is what the blastocysts look like. राइट, सो एम्ब्रियो इस पर्टिकुलर स्टेज में जाकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रीन वॉल में. राइट, अब इम्प्लांटेशन होता कैसे है? हाउ डज दिस एम्ब्रियो स्टिक टू द यूट्रीन वॉल और फॉर्म एन एसोसिएशन विद द यूट्रीन वॉल? लेट अस मूव ऑन इनटू दैट.
सो तुम्हें पता है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट और द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. Alright, so here the uterus implants itself. अब implantation होता कैसे है? The trophoblast layer, it starts to form chorionic villi, finger-like projections, right? And these finger-like projections, ये project हो जाते हैं into the uterine wall, into the endometrium of the uterine wall, and they form intimate connection between the uterine wall, right? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं there are finger-like projections which are occurring. Alright, so this is exactly how implantation occurs and after that development starts, right? तो जो trophoblast layer थी उसने बनाए finger like projections which are known as the chorionic villi, right? और ये जो chorionic villi होते हैं वो प्रोजेक्ट कर जाते हैं into the uterine wall, और यूट्रीन वॉल में जो ये इनके डिप्रेशंस होते हैं वहां पे क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनकी वजह से एक इंटीमेट एसोसिएशन हो जाता है, इंटरडिजिटेशंस हो जाते हैं, राइट? दे सॉर्ट ऑफ फॉर्म अ कनेक्शन लाइक दिस, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सो दैट maternal यूट्रस और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाए, राइट? नाउ यू ऑलरेडी नो कि जो इनर सेल मास है वो बनाता है एम्ब्रियो, right? So the embryo, it remains attached to these villus-like structures or these finger-like structures through a cord, a tube-like cord which is known as the umbilical cord, right? So अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे connections बनते हैं during implantation. अच्छा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाने लगता है, इट स्टार्ट्स टू कनेक्ट विद द यूट्रीन वॉल, तो यूट्रीन वॉल भी दो टाइप के केमिकल्स रिलीज करती है. इट रिलीजेस इंटेग्रिन एंड ऑस्टियोपोंटिन. ये दो केमिकल्स जो होते हैं ना वो अडहेशन कॉज करते हैं यूट्रीन वॉल और कोरियोनिक विलॉय के बीच में अडहेशन का काम करते हैं. सो दीज टू केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय द यूट्रीन वॉल, राइट? तो तुम देख रहे हो डेवलपिंग एम्ब्रियो का भी काम है इस कनेक्शन को बनाने में और मटर्नल यूट्रस वॉल का भी काम हो रहा है इस कनेक्शन को बनाने में. सो दैट इज हाउ द कनेक्शन इज मेड. नाउ वी कम टू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कैसे होती है? एक्चुअली जो ये कनेक्शन बना है ना थ्रू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट ओनली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ placenta. The placenta is a structural and functional unit which is formed through connection, through association of the maternal uterus with the developing embryo. तो ये cushion like structure होता है, right, which forms here, and then these villi are known as the placental villi, right? So this is a structural and functional unit which is formed, which is connecting the mother with the fetus, with the developing fetus, right? अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है प्लासेंटा का? देखो यहाँ पे ये जो इंटरडिजिटेशंस फॉर्म हुए हैं ना, यहाँ पर ब्लड सप्लाई का एसोसिएशन होता है. ब्लड सप्लाई का एसोसिएशन, व्हाट वी मीन बाय दैट इज जो फीटस का ब्लड है it will come very close to the mother's blood, right? So the blood vessels of the mother
they come very close to the blood vessels of the developing embryo. राइट अब जब दोनों का ब्लड बहुत पास आया है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, इट्स जस्ट दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ क्लोज एसोसिएशन सो दैट मटेरियल्स कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन द फीटस एंड द मदर. ठीक है, तो इस तरह से जो ब्लड होता है वो एक इंटीमेट कनेक्शन बना लेता है थ्रू द प्लेसेंटा, राइट, एंड द प्लेसेंटा is actually performing the function of exchange of materials, right? So अगर हम लोग प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करते हैं, it causes exchange of materials as well as another function of the placenta is to release certain hormones. तो एज सच प्लेसेंटा का एक एंडोक्राइन फंक्शन भी हो गया टू रिलीज सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स और हॉर्मोन्स, राइट. नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल एज टू हाउ दीज फंक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द प्लेसेंटा. Okay, so when we talk about the functions of the placenta, first of all there is exchange of materials. अब देखो, there is a need to exchange nutrients, right? There is a need to exchange the waste materials as well as certain materials which are responsible for keeping the baby healthy or the developing fetus healthy. They are also exchanged between the mother and the developing fetus. तो होता क्या है, there are a lot of materials which are exchanged between the maternal blood and the fetal blood, and those materials include gases, there is exchange of oxygen and carbon dioxide, right? There is exchange of waste materials, right, and there is exchange of nutrients also. जाहिर सी बात है, fetus develop कर रहा है, it needs energy, right, for the development to take place, right, so it requires nutrients also. Apart from this, there are various antibodies which are also transferred from the mother's blood to the fetal blood, right. अब देखो, अगर हम लोग इन मटेरियल्स को अलग अलग देखें, गैसेस, जो गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनका एक्सचेंज बहुत जरूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी रिलीज्ड आउट इनटू द मदर्स ब्लड फ्रॉम द फीटस ब्लड एंड ऑक्सीजन अंदर आनी चाहिए, right, so that it can be utilized to produce energy, right. Then the waste materials which are produced by the developing fetus, they also have to be transferred to the mother's blood so that it can be excreted out, it can be removed, right. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मदर्स ब्लड से बेबी के ब्लड में आते हैं या डेवलपिंग फीटस के ब्लड में आते हैं, सो दैट इट हैज इनफ एनर्जी, enough nutrients to undergo further development, right. And then there are also antibodies. Antibodies are substances which will increase the immunity of the fetus to certain microbes, to certain diseases. It will make it unsusceptible to various diseases, right. सो जो एंटीबॉडी एक्चुअली प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड से फीटल ब्लड में जाती है, दैट इज आईजीजी. ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी जाती है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. So this was about the exchange of materials, which is a function of placenta. Next we move on to the secretion of hormones. अब देखो, when we talk about hormones, there are several hormones which are secreted by the placenta. There is the SCG, right? There is the human placental lactogen. The HCG stands for human chorionic gonadotropin, right? Human placental lactogen is also secreted by the placenta, right? Later on, it also secretes progestogen and estrogen. ठीक है, in later stages of pregnancy, it is also known to secrete cortisol and relaxin, right. So let us look into detail as to how these hormones function to maintain pregnancy in a woman. All right, so let us discuss about these hormones one by one. So HCG or human chorionic gonadotropin,
अच्छा, this is one of the most important hormone that the placenta it secretes to maintain pregnancy, right? In fact, sometimes it is also known as the pregnancy hormone. First 2 months में स्पेशली इसका जो concentration होता है वो काफी ज्यादा होता है, right? How the human chorionic gonadotropin functions? देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेक्रीट करता है, राइट? सो the human chorionic gonadotropin it actually maintains the secretion of the corpus luteum. इसको रिग्रेस करने से इनहिबिट करता है. कॉर्पस ल्यूटियम को जब मेंटेन करेगा तो द कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, राइट? एंड यू ऑलरेडी नो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्रीन वॉल. यूट्रीन वॉल को प्रोलिफरेट करता है, उसको इंक्रीज करता है सो दैट द डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन बी कैरिड बाय द यूट्रस. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, whereas the estrogen here it leads to the development of the mammary glands. Right, by development of mammary glands we mean is that there is enlargement of the mammary glands, क्योंकि as such pregnancy maintain करना भी important है, as well as जो neonatal period होगा उसके बाद उसके nutrition का भी इंतजाम estrogen करता रहता है, right? So these two hormones are being synthesized by the corpus luteum under the effect of the human chorionic gonadotropin. क्योंकि ये 2 months तक काफी हद तक इसका concentration ज्यादा होता है, तो जब pregnancy test होता है ना तो भी इसका level देखा जाता है. अगर इसका level high होता है that is an indication of pregnancy, right? After 2 months the corpus luteum in fact regresses, disintegrate कर जाता है, and till that time the placenta in fact takes up the function of secreting the progesterone and the estrogen. तो यहाँ पे तुम देख ही सकते हो progesterone and estrogen they are secreted by the placenta also. So after 2 months ये जो corpus luteum का काम था it is undertaken by the placenta itself, right? So this was about progesterone and estrogen. HPL क्या है? Human placental lactogen. The human placental lactogen, देखो lactogen is related to milk, right? So जाहिर सी बात है human placental lactogen will also be responsible for the development of the mammary glands. Right? So there is the human chorionic gonadotropin which maintains the corpus luteum up till 2 months. Then there is the human placental lactogen, right, which will lead to the development of the mammary glands for further nutrition of the baby when it is born, right? Then there is the progestogen and estrogen. तुम्हें पता ही है already कि placenta after 2 months it takes up the function of secreting these two hormones. The progestogen it basically proliferates the uterine wall so that maintain कर सके pregnancy, right? And it also results in the relaxation of the muscles. मसल्स रिलैक्स रहे, यूट्रस का इनलार्जमेंट हो सके, उसमें भी ये दोनों ही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं. Apart from progesterone, estrogen is also released by the placenta after these 2 months. So estrogen will again lead to the development of the breast as well as expansion of the uterus, expansion of the genitalia of the female. देखो बेबी को कैरी करना है, right? And the embryo is undergoing development. तो थोड़े थोड़े टाइम पे there will be an increase in the weight, increase in the space also, right? So that is why the uterus has to be enlarged और वो काम भी estrogen करेगा, right? And then in the later stages of pregnancy, cortisol, relaxin ये सारे hormones भी secrete होते हैं. Relaxin is one hormone which actually helps in childbirth. जो pubic symphysis होता है उसका जो connective tissue होता है उसको soften करता है ये relaxin, relax करता है basically so that childbirth में help कर सके, right? So this was about the secretion of hormones from the placenta. Next we move on to the embryological development. Okay, talking about the embryological development, अब तुम्हें पता है blastocyst जो होता है उसमें जो outer layer है वो interdigitations form कर चुकी है, right? Chorionic villi form कर चुकी है. जो inner mass होता है cells का that is supposed to form the embryo.
right? So we have the inner cell mass, which is actually consisting of stem cells, cells which are free to differentiate into any kind of cell, right? तो यहाँ पे ये जो स्टेज होती है इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला स्टेज, राइट? देन फर्दर डेवलपमेंट में क्या होता है, ये जो इनर सेल मास होता है, इसके जो स्टेम सेल्स होते हैं, दे डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर्स, राइट? सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दोस टू लेयर्स. ऊपर के साइड फॉर्म होती है एपीब्लास्ट, so this layer here is the epiblast, right? एंड इसी के नीचे एक लेयर की हाइपोब्लास्ट फॉर्म होती है. This here is the hypoblast, right? Further, इन्हीं लेयर्स का डिफरेंशिएशन होता है टू फॉर्म द थ्री जर्म लेयर्स फ्रॉम विच ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स विल फर्दर डेवलप. जो एपीब्लास्ट होता है, इट फॉर्म्स द एक्टोडर्म, right? The hypoblast forms the endoderm, and then between the ectoderm and the endoderm, the mesoderm or the middle layer forms, which again arises from the epiblast, right? और जब ये तीन germ layers बन जाते हैं, then the embryo, the developing embryo, is at a stage which we call gastrula, right? So blastula से gastrula तक बनने में there are three germ layers which are formed, and through these three germ layers अलग-अलग organs, अलग-अलग organ system and अलग-अलग tissues arise करते हैं. Now let us look at how फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट स्लोली इंक्रीज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, so that it becomes a fully developed fetus before childbirth. Alright, so let us look at the development through the three trimesters. So first month में क्या होता है? There is the development of the heart. Right? And this can be detected with the help of a stethoscope, right? So the doctor detects the heartbeat of the baby or the fetus or the developing fetus rather through a stethoscope. तो ये first month में हो जाता है, right? Then in the second month, what happens is the limbs and the digits of the baby, they start to develop. Right? Till the end of the first trimester, that is at the end of the 3 months, there is the development of the organ systems. So the major organ system, they develop at the end of the first trimester. Then the development moves on into the second trimester. Second trimester में in fact 5th month में देखा गया है that the limbs of the baby, they start movement. Right? So इसीलिए कभी-कभी क्या होता है ना, when we have to note down as to whether the baby is healthy, right? तो डॉक्टर अक्सर ये पूछता है from the pregnant mother that when did she observe the movement of the limbs, right? Because it is extremely important कि 5th month या 5th month के end तक there is movement of limbs. It detects or denotes that the baby is extremely healthy, right? So there is movement of limbs as well as there is development of fine hairs. Right? So hairs आने लगते हैं baby के at the 5th month. Then at the end of the 6th month or the second trimester, the eyelashes develop.
the eyelids separate, and the baby's body is entirely covered by fine hairs. Right? So this occurs during the second trimester. After this, during the third trimester, the further development of the baby takes place and जितने भी organs वगैरह बने होते हैं उनकी efficiency increase करती है, right? And finally, at the end of the 9th month, the embryo has fully developed into the fetus, and the fetus is now ready to be expelled out of the body of the mother. So third trimester के time पे there is full development of all the organs. They attain functional efficiency, and finally the baby is ready to be birthed, right? So this was about the development. In very short, I have noted down all the steps that occur during embryological development. I hope this is clear to you. So at the end of the third trimester or the 9 months, the child is birthed by the process of parturition, right? Now we are going to discuss about parturition as well as lactation or the neonatal care that needs to be provided to the baby in the next class. Till then, revise all this and stay tuned. Thank you.